Hello kids, how are you all? I hope you are doing well. Today we discuss chapter 1, the human body circulatory system. Here is some warm-up questions. Write yes or no for each of the following. So what you have to do, you have to write yes or no as you already read these things in your previous classes. Okay students? Blood flows through blood vessels in our body. So it is true. So you will write here yes. So like this you have to do these questions. Okay students? Now let's know about the circulatory system, parts of the circulatory system, heart structure and function, blood vessels, keeping your heart healthy. Okay students, now first we will discuss about the circulatory system. The human body can be compared to a very complex machine. There are several organs and organ systems with our body. The digestive system, the respiratory system and the excretory system are some of them that are responsible for the effective functioning of our body. The circulatory system delivers things to different parts of our body. This can be compared to deliver truck that transports packets. But unlike these trucks, our circulatory system carries oxygen, nutrients and cell waste through blood to different parts of our body. This is need to constantly move these things around our body and therefore our circulatory system can never take a break. So स्टूडेंट क्या है कि हमारी बॉडी क्या एक मशीन है और मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में क्या है बहुत सारे पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स से ही हमारे ऑर्गन सिस्टम्स है. ओके सो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड्स और जो चीजें हमारा फूड एंड ऑल सबको क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू क्या होते हैं, वो ऑक्सीजन हो, न्यूट्रिएंट्स हो या सेल वेस्ट हो, जो भी है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में जो है मूव करता है. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स. The heart, a multi-chambered muscular organ that pumps blood throughout the body. A tissue that comprises of plasma, red and white blood cells and platelets. Blood vessels that comprise of arteries, veins and capillaries. Okay students, so these are the parts of our circulatory system, that is blood vessels. और ये सब क्या करते हैं, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं. एंड द मेन पार्ट इज हार्ट. ओके स्टूडेंट्स, here is heart structure and function. The human heart is a muscular organ roughly triangular in shape made up of type of muscles known as cardiac muscles. The size of our heart is about the same as our clenched fist and is located in between the lungs, right in the center and above the diaphragm in the rib cage. The narrow end of the roughly triangular heart is pointed to left side, giving a feeling of the heart being on the left side. The heart has four compartments called chambers inside it. The upper two chambers of the heart are called atria, singular atrium or auricles. Okay students, and the lower two chambers of the heart are called ventricles. These pumps the blood out of the heart. The left and the right side of the heart are separated by a partition called the septum. Okay. So these are the functioning of our heart students. Heart is made up of cardiac muscles. Heart किसका बना होता है बच्चों? cardiac muscles का बना होता है. और जो हमारा heart है वो कहाँ होता है? हमारे जो chest है वो इन बिटवीन होता है, बट उसका जो ट्राइंगुलर वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि जो हमारा हार्ट है बच्चे वो लेफ्ट साइड पे. ओके, जो हमारा हार्ट जो है वो मेनली कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड है? 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है. जिसके 2 चैम्बर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स, और लोअर 2 को हम बोलते हैं बच्चा वेंट्रिकल्स. ओके स्टूडेंट्स, लुक हियर, देयर इज अ पिक्चर ऑफ हार्ट. ओके स्टूडेंट्स, in this picture every part of heart is mentioned, so you can look here and read this picture. The functioning of the heart can be summarized as follows. Now हम क्या read करेंगे बच्चा? function of heart. Okay, oxygen poor blood shown as blue from the body arrives into the heart to collect oxygen. The heart then sends this blood to lungs to collect oxygen. This oxygen rich blood shown as red is now brought back again to the heart. The heart now passes this oxygen-rich blood to be distributed all the body parts. The heart pumps blood by regular contraction and relaxation of the auricles and ventricles. The contraction and the relaxation of auricles and ventricles take place alternately.
One complete contraction and relaxation of heart is called heartbeat. The sound of the heartbeat is caused by opening and closing of the heart valves. As they pump blood, we can feel the heartbeat of person by feeling the underside of the wrist, at the neck and also in the temple. This is called feeling the pulse. The heart of normal healthy person beats about 60 to 100 times per minute under normal conditions. But the rate of heartbeat can increases during special physical exercise to more than 100 per minute. सो स्टूडेंट क्या है कि जो हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है बच्चे, हमारे हार्ट से हमारी बॉडी में प्योर ब्लड जो है आता है, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे हार्ट के फंक्शन है। और वो कैसे होता है, जब हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन में दोनों ही जो हमारे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और जब हमारा हार्ट एक कंप्लीट जो है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन राउंड कंप्लीट करता है, सो दैट इज हार्ट। एक नॉर्मल पर्सन की जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, 60 to 100 पर मिनट। बट जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है बच्चों वो इंक्रीज हो जाती है मोर देन 100 पर मिनट। हियर इज एन एक्टिविटी, tabulation of your heartbeat. Materials required: lab notebook, pen, pencil, skipping rock, hula hoop, a timer, etc. Preparation: practice finding your pulse. Use the first two fingers of one hand to feel your radial pulse on the opposite wrist. You should find your radial pulse on the thumb side of your wrist, just below the base of your hand, practicing finding your pulse until you do it quickly. So what you can do, students, you can find your pulse like this. You will hold your hand like this and you can feel your pulses. Okay, students, you can try to count quickly. Okay, so you can do practice at your homes. Procedure: measure your resting heart rate. You can do this by counting your pulse rate for 10 seconds and then multiplying it by 6. This will give you your heartbeat per minute. Choose which exercise you want to do first. Before starting it, make sure you have been resting for few minutes so that your heart is at its resting heart rate. Perform the first exercise, say skipping, for 15 minutes and quickly count your pulse rate, record your findings. Relax and bring your heartbeat to normal before moving on the next exercise. Perform the next exercise, say jumping jack, for 15 minutes and quickly count your pulse. You can do this for at least 5 different exercises and record your findings in tabular form in the format given below. So what you have to do, students, you can take these things, like you can do some exercise and then you will check your heart rate and then you will write the heart rate in this observation table. Okay, students, so you can do this for different 5 exercises. Here is, first you will write the name of exercise, then you will write your heart rate before exercise, then you will write heart rate after exercise. Okay, students, here is check and wait. Write T for true and F for false statement. As we already read about these things, so you can do it by yourself. Here's blood. Blood is the fluid that is the main agent of transportation in our body. It flows inside the blood vessels. It consists of fluid part known as plasma and solid parts known as RBC, WBC and platelets. Let's understand their functions. First is plasma. This is liquid component of the blood in which the blood cells RBC, WBC and platelets are suspended. It transports nutrients to the cell and also carries waste from the cells. So student, first one is plasma. Plasma क्या होता है बच्चों, एक liquid component है हमारे blood का और उसमें क्या consist होती है, हमारी RBCs, WBCs और platelets. वो सब किस में होती है, हमारे प्लाज्मा में होती है। और प्लाज्मा किस में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। Here is red blood cells. These carry oxygen from the lungs to the rest of the body. It also carries carbon dioxide from the rest of the body to the lungs. So जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या करती हैं, आपके ऑक्सीजन को कैरी करती हैं आपके लंग्स से और आपकी कंप्लीट बॉडी में जो है उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं और आपकी बॉडी से जो है जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स है उनको उसको क्या करती है बच्चा, कैरी कर कर लेकर आती है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द 2 फंक्शन ऑफ आवर रेड ब्लड सेल्स. Here is white blood cells. These helps to fight infection and to help with the immune system.
सो स्टूडेंट, जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो आपको क्या देती हैं, आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग बनाती है, और सबसे इम्पोर्टेंटली वो आपकी इन्फेक्शंस और जो आपकी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप इन्फेक्ट होते हैं, लाइक वायरल, कोल्ड, कफ, इन सबसे इन्फेक्शन से बचने में आपकी जो हेल्प करती है, दैट इज योर व्हाइट ब्लड सेल्स. हियर इज प्लेटलेट्स. These help in blood clotting wherever there is an injury. So प्लेटलेट्स क्या करती हैं स्टूडेंट, जब आपको कहीं कट लगता है या आपको कोई इंजरी हो जाती है और वहां से ब्लड बाहर आता है, तो प्लेटलेट्स उसकी क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, do you know not all blood is red. While humans have red colored blood, other organisms have blood of varying colors. Crustaceans, spiders, squid, octopuses, etc. have blue blood. Some types of worms and leeches have green blood. Some species of marine worms have violet blood. Insects including beetles and butterflies have colorless or pale yellowish blood. The color of blood is determined by the type of respiratory pigment used to transport oxygen via the circulatory system to cells. The respiratory pigment in human is a protein called hemoglobin found in red blood cells. सो दैट इज द थिंग स्टूडेंट की सभी का ब्लड जो है वो रेड नहीं होता है. जैसे हियर इज सम एग्जांपल, स्पाइडर्स हैं आपकी, उनके ब्लड का कलर कैसा होता है बच्चों, ब्लू होता है. वर्म्स का, जो आपके वर्म्स हैं, लिचेस हैं, उनका कलर कैसा होता है, ब्लड का कलर ग्रीन होता है. सो ऐसी बहुत सारे कलर्स होते हैं ब्लड के, और वो डिपेंड किस पे करते हैं कि जो आपका कौन सा आपकी बॉडी का पार्ट जो है, कौन सा पिगमेंट जो है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज ब्लड वेसल्स. Blood vessels are a fine network of hollow tubes that transport blood throughout the body. They form an intricate network within the body so that blood along with the nutrients and other substances may be transported throughout the body. There are three main types of blood vessels. These are arteries, veins and capillaries. Okay students, first one is arteries. Look here students, in our body there are so many arteries which carries the blood. Okay, they are blood vessels that carries blood away from our heart. They have thick strong walls. Small arteries are called arterioles. जो हमारी small arteries होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं students, arterioles. Aorta is the largest artery in our body. Aorta is the largest artery in our body. Other important arteries are pulmonary artery, carries blood to the lungs. Carotid artery carries blood to the brain. Okay student, so these are different type of arteries in our body which do different work. Okay, here is veins. Look, here is a picture which shows veins. Okay, in this picture there are veins in blue color. Okay students, these blood vessels carry blood back from the tissue to the heart. So ये क्या करते हैं, आपके टिश्यूज से क्या करते हैं, ब्लड को वापस कहाँ लेकर आते हैं बच्चों, हार्ट में लेकर आते हैं. They have thinner walls than arteries. Veins branch into small venues. Veins have walls to prevent the backflow of blood into the body parts. The largest vein is called the vena cava. There are two sections of vena cava. The superior vena cava returns blood from the upper part of the body, such as head, neck, chest, etc. Whereas the inferior vena cava returns blood from the lower part of the body back to the heart. Okay students, look here, here is a picture. In this picture, vein, venules, capillaries, arteriole and artery. So these are the things which helps in our body to complete circulation of everything. Okay students, here is capillaries. They are the smallest type of blood vessels in our body. They connect the smallest arteries to the smallest veins. Okay, so जो आपकी कैपिलरीज है वो क्या करती है बच्चे, आपकी स्मॉलेस्ट वेन्स को स्मॉलेस्ट कैपिलरीज के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है. ओके, हियर इज, डू यू नो, from the very first time our heart starts pounding until the time of death, it may beat more than 3.5 billion times. The heart is at the center of circulatory system. The average heartbeat is 1 lakh times each day, pushing around 2000 gallons of blood throughout our body. With the lifespan of 70 to 90 years, the heart will beat to the 3 billion times and circulate 50 to 65 million gallons of blood. Listen student, gallon is the unit of blood in which we measure our blood. Okay.
एंड अवर हार्ट क्या करता है बच्चों, आपका हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है और वो मेन पार्ट है आपके सर्कुलेशन सिस्टम का, या आप बोल सकते हो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो क्या करते हैं डेली एटलीस्ट इन अ डे आपका कितना जो है 2000 गैलन्स ऑफ ब्लड जो है आपका हार्ट जो है आपकी बॉडी में थ्रू आउट बॉडी में पुश करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव चेक एंड मेड, सो you can do it by yourself as we already discussed about these things. Okay students, here is keeping your heart healthy. Remember that our heart is a very active muscle working for us non-stop day and night. If we want it to be strong, we need to give it a share of regular exercise. Skipping, dancing or playing games like tennis, basketball, very good for our heart. We must give it at least half an hour of rigorous exercise every day. That means student हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें डेली कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए। उससे क्या होता है आपका हार्ट जो है वो आपका एक्टिव रहता है और आपका हार्ट जो है वो अच्छे से वर्क करता है। A healthy breakfast is the key to a healthy heart. So you have to do a healthy breakfast. We must eat a variety of healthy foods and avoid food high in unhealthy fats, such as saturated fats and trans fats. Reading food labels can help us figure out if our favorite snacks contain these unhealthy ingredients. So that means student, अगर आप कोई खाना खा रहे हैं जो आप बाहर से लेकर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उनके ingredients को read करना चाहिए। वहां से आपको पता चलता है कि वो जो खाना आप खा रहे हैं is it healthy or not. Okay, here is, we must not to forget include a generous amount of fruits and vegetables in our daily diet along with whole grains. We must choose and prepare food with less salt. We always tend to consume more sodium salt than our body needs. That means हमें थोड़ा कुछ ज्यादा जो है सोडियम सॉल्ट हमें अपनी बॉडी की नीड्स से अकॉर्डिंग से थोड़ा सा ज्यादा जो है हमें खाना चाहिए। ओके, Consuming omega-3 fats is good for our heart and brain. So जो आपके omega-3 fats होते हैं स्टूडेंट वो आपके heart और brain के लिए बहुत अच्छे होते हैं। We must try and spend less time sitting still. Taking a break while watching TV, playing computer games or doing our homework is a good idea. We must get up from our seat and take a stroll around if our works demand us to sit for long hours. Taking the stair instead of an elevator is another good option to keep our heart healthy. We should drink lots of water every day and then fizzy drinks or sugary fruit juices. Okay, student, it is very important to reduce the level of stress by relaxation and stress management techniques. So student, these are some things जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप सारा दिन बैठे होते हैं, लाइक आप क्लासरूम में पूरा दिन बैठे हैं, आप फिर घर जाके होमवर्क कर रहे हैं, आप वहां पे भी बैठे होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी देर उठकर जो है कुछ मूवमेंट्स करनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका हार्ट जो है, आपका ब्रेन जो है या आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स्ड फील करती है। सो दीज आर सम थिंग्स जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और जिससे क्या होगा कि हम हेल्दी हो सकते हैं। लाइक आप लोग क्या करते हैं, एलिवेटर यूज करते हैं, उसके प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हैं, आप लोग स्टेयर्स का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में अगर फॉलो करें तो हम क्या होंगे, हेल्दी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, what we learned in this chapter, now we will discuss it in a nutshell. Here is, the circulatory system is the main transporting system in our body. हम सबको पता है जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है हमारी बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन made up of cardiac muscles which is responsible for pumping blood throughout our body. So जो आपका हार्ट है स्टूडेंट्स वो मस्कुलर ऑर्गन है और वो किससे बना होता है बच्चे, कार्डियक मसल्स से बना होता है और वो हमारे जो कार्डियक मसल्स हैं वो हमारे ब्लड को पंप करती हैं थ्रू आउट आवर बॉडी. Blood is the fluid agent of transportation in our body that comprises of plasma, RBC, WBC and platelets. Blood vessels are the hollow tubes that transport blood throughout the body. They are of three types. Okay students, first one is arteries. They carry blood away from the heart to different body parts. Veins, these carry blood back to heart from different body parts. Capillaries, these are the smallest connection between arteries and veins.
It is essential for us to take care of our heart. Exercise with a nutritious diet and healthy stress-free lifestyle can help us achieve this. So आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, न्यूट्रियस डाइट लेनी चाहिए और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए. Here are some keywords. First one is blood. A sticky red liquid that carries oxygen, water, nutrients to all parts of the body. Here is blood vessels. Thin tubes that carry blood to different parts of the body. Here is circulatory system. Organ system that helps in the transportation of essential substances inside the body. Thank you, students. We will meet again.